Differentiate between tuberculous ulcer and typhoid ulcer. सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. सो ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी से. ट्यूबरक्युलस अल्सर कैन बी एनीवेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट कॉमन इन द टर्मिनल इलियम एंड सीकम, रेयरली इन कोलोन. ट्यूबरक्युलस अल्सर मोस्ट कॉमन होता है टर्मिनल इलियम और सीकम में, कोलोन में बहुत रेयर होता है. टाइफॉइड अल्सर इज़ मोस्ट कॉमन इन टर्मिनल इलियम, दैट इज़ पेयर्स पैचेस में, एंड इट मे ऑकर इन जेजुनम. सो मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ट्यूबरक्युलस अल्सर, terminal ileum and cecum, and for typhoid ulcer it's terminal ileum in the Pear's patches and it may occur in the jejunum. Orientation of the ulcer, so it is perpendicular to the long axis of the bowel. That means if this is the long axis, it is perpendicular to it, that is they are transverse ulcer, and this is due to the spread by lacteals or lymphatic. Tuberculous ulcer are transverse ulcer. Typhoid ulcers are parallel to the long axis of the bowel, that is typhoid ulcers are longitudinal ulcers due to the involvement of Pear's patches. Typhoid ulcers में Pear's patches involved होते हैं, एंड ट्यूबरक्युलस अल्सर का स्प्रेड होता है लैक्टियल्स या लिम्फैटिक्स के थ्रू. सो ट्यूबरक्युलोसिस ट्रांसवर्स अल्सर और टाइफॉइड अल्सर में पेयर्स पैचेस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए दीज आर लॉन्गिट्यूडनल अल्सर्स. देन माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ ट्यूबरक्युलस अल्सर, एपिथेलॉइड सेल ग्रैन्युलोमास विथ और विथआउट केशियस नेक्रोसिस. एपिथेलॉइड मीन्स epithelial like. So in tuberculous ulcer we find epithelioid cell granulomas with or without caseous necrosis. In typhoid ulcer, lymphoplasmacytic infiltrate with histiocytes, some of which show erythrophagocytosis, fibrosis and stricture formation. So टाइफॉइड अल्सर में फाइब्रोसिस एंड स्ट्रिक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट विथ हिस्टियोसाइट होता है, एंड सम ऑफ दीज कैन बी एरिथ्रोफैगोसाइटोसिस, मतलब आरबीसी का फैगोसाइटोसिस करेंगे वो. इट हैज़ लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट विथ हिस्टियोसाइट्स. कॉमन कॉम्प्लिकेशन, fibrosis and strictures formation common. Intestinal tuberculosis may present with subacute or acute intestinal obstruction. Intestinal tuberculosis में intestinal obstruction होता है. This could be subacute या acute. Intestinal tuberculosis can cause acute or subacute intestinal obstruction, and there is fibrosis and stricture formation in tuberculous ulcer. Complications are rare in case of typhoid ulcer. Typhoid ulcers में perforations are common. Tuberculous ulcer में perforations may be present. Bleeding is present in case of typhoid ulcer. Okay. So first point is causative organism. Tuberculous ulcer के लिए Mycobacterium tuberculosis. टाइफॉइड अल्सर के लिए साल्मोनेला टाइफाई. साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबरक्युलस अल्सर इज टर्मिनल इलियम एंड सीकम. टाइफॉइड अल्सर्स में पेयर्स पैचेस इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज़ मोर कॉमन इन टर्मिनल इलियम. ओरिएंटेशन ऑफ द अल्सर, ट्यूबरक्युलस अल्सर्स आर ट्रांसवर्स अल्सर्स ड्यू टू द स्प्रेड बाय लैक्टियल्स, whereas typhoid ulcers, due to the involvement of Pear's patches, they are longitudinal ulcers. Microscopic feature of tuberculous ulcer, they have epithelioid cell granulomas with or without caseous necrosis. Typhoid ulcer, lymphoplasmacytic infiltrate with histiocytes, and these can
show erythrophagocytosis. Erythrophagocytosis means phagocytosis of RBC. Complications are rare in case of typhoid ulcer, whereas complication in case of tuberculous ulcer involve intestinal obstruction in case of intestinal tuberculosis, and there's fibrosis and stricture formation. Perforations are common in case of typhoid ulcers, and it may be present in tuberculous ulcer. Bleeding is present in typhoid ulcer and absent in tuberculous ulcer.